Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, can we do quiz? Sir, in this period, what we do GK or math? Sir, can we do one quiz? Sir, can we do Sir, math? can we do maths exercise? Yes, Sir, can we do quiz? Sir, Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have given you a treat, so please follow my order. Thank you, beta. Alankrita, thank you so much. Sir, can we do GK? Sir, can we do math? Sir, can we do GK? Sir, it's a quiz. Actually, अच्छा maths हम लोग कर सकते हैं, but you all have to do the last 3 chapters. Can you all fill the answers? We will discuss the answers first. It will take 10 minutes. 10 minutes लगेंगे. फटाफट fill करो. After that, So, in the last 30 minutes, we will do math. yes. So we have already done till chapter number. Sir, Sorry, can page we number. do one quiz also? Completed the syllabus. We have done till page number. Sir, can we do one quiz also? सर आपने Yes, जितना beta. Yes, yes, yes. सर आपने जितना टेस्ट करवाया उसका हम लोग रिवीजन कर सकते हैं. Sir, Okay. Excuse me, sir. We do not try to आश्रय बेटा, आश्रय बेटा, उल्टे क्यों बैठे हो बेटा? सीधे बैठ जाओ आश्रय. सर जितना पढ़ाया आपने उसका टेस्ट ले लीजिए. Yes, sir. अच्छा, ये कैसे Sir, हुआ आपने आश्रय? तो कोई करंट अफेयर लिखा ही नहीं है नोटबुक में. नहीं बेटा, I will give you the PDF of current affairs. ठीक है? Don't worry. एग्जाम के बाद Today. I will give you the PDF today. Okay. Sir, can we do one quiz also? सर आप पूछ लीजिए. Sir, every day Ashray said this. What? Yes. Quiz. नहीं बेटा, क्विज नहीं करेंगे. पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी हम लोगों को. सर क्या हम लोग रिवीजन कर ले? पूरा टाइम वेस्ट हो गया. Okay, anagrams, पता नहीं क्या है. Anagrams. Instagram होता है वैसे ही क्या? Okay, so we have to write Sir, fill the answers in this one. Anagrams are the words. Yes, beta. Yes. sir, can I go to bring my notebook? Yes. Okay, sir. So how many current affairs will be there? वो तो बेटा मुझे याद नहीं है, but I will find out how many will be there. So you have written the current affairs ना तो. No, बेटा, I have not written actually. मैं एक बहुत ही मतलब Sir, in this poor page, आदमी हूँ. in this chapter, what we will do? Himanshi ma'am has written. Yes. Sorry, Vamika. Sir, in this chapter, what we will do? We will. I am can't telling you what. understand. I am telling you. Yes. So the first word is. Please don't speak like that. Let me read the question first. Anagrams are the words made by changing the order of the letters of other words. For example, danger is made by changing the order of the letters of garden. Garden को change करके हम danger बना सकते हैं. So danger and garden are anagrams. तो danger और garden को हम anagram बोल सकते हैं. ठीक है? यहाँ पर भी हमें यही काम करना है. Where you are Each new studying word anagram. starts with a different letter. One is done for you. Sir, So what is the answer of second one? Okay, everyone.
Able. Able. Third is star. Fourth is hint. Fifth Second is is able. Fifth is idea. Let me write the answers for you. It will be a little easier to write the answers if I write on the board. Third is star. Just a minute बेटा, just a minute. इतनी तेज भाग जाते हो तुम लोग, मैं इतना स्लो आदमी हूँ. चलो बेटा देखिए. Yes, sir. Sir, fourth is hint. Just a minute. Fifth is idea. And sir, sixth is once. अरे बेटा नहीं, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं. इतनी जल्दी करोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे तुम लोग तो Sir, मतलब Sir, what you are right. तुम्हारी स्पीड तो लाइट की स्पीड की तरह है. Your speed is like the speed of light. Okay, so this is page number, GK page number. What is page number? 45. 45. Page number 45 short में लिख दिया मैंने. So answer of the first one तो पहले ही सही किया हुआ है. Second one the answer is able. I am only writing the answers. Able. Third one, the word is hours. Sir. SAR, very nice. SAR, SOUR. अच्छा, अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं इसके, ठीक है. Fourth, thin. Sir, hint. Hint, very nice. HINT. Hint. Fifth one, idea, very nice. What an idea, Sarji. What an idea. Sixth, अलंकृता क्या खा रही है बेटा? Once, carrot. So carrot. अच्छा, भूख लगने लगी मुझे. Cone. Once. No, sir. Note. नहीं. Once. 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 ठीक है. ONCE. Once in a while. सुना है कभी? Yes, sir. Sir, when we do story writing, we write that only. Once. Next, Seven. seventh is note. Note. No, eighth is soul. Eighth. Sir, please tell again. Soul. Sir, ये लिखा है बेटा, आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं. sir, I know. I have learned your meeting passcode. You have learned the Yes, meeting sir. passcode. Oh, very chalak. Very chalak. Sir, can I tell you? 0040 47. 00407. 47. No. 47. Means I am disconnected. So please tell the definition again. So, sir, can I come in a minute? अच्छा बेटा, ऑल ऑफ यू, यहाँ पर एक और चीज दी है. यस यस यस, एक और चीज यहाँ पर दी है. We have to write the first letter of these words in the boxes which are provided in front of. ये ड्रेस एक बनी हुई है यहाँ पर ड्रेस. Passion. हाँ, तो ये क्या वर्ड बनेगा? फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? फर्स्ट वाले का आंसर था क्या था? फ्ली. Flea. FLEA, फ्ली. So this is तो उसका passion. फर्स्ट लेटर एफ, एबल का फर्स्ट लेटर ए, सार का फर्स्ट लेटर एस, एच का फर्स्ट लेटर, सॉरी हिंट का फर्स्ट लेटर एच, आइडिया का फर्स्ट लेटर आई, वंस का फर्स्ट लेटर ओ, नोट का फर्स्ट लेटर एन, सोल का फर्स्ट लेटर F. फैशन Passion. एस, फैशंस. ओके.
So can we start the second one? Yes, beta, yes. Let's start the second one. चलो बेटा, बी वाला. That second is eager. सर तो पहले वाला 2 सेकंड और कर दिए बस. अच्छा, ओके ओके. सर पहले वाला कर दिए बस 2 Yes. सेकंड में कर दिए. Yes, yes, okay. Sir, you can write right side. Yeah, I will use the right side. Nice idea, Vamika. You are so intelligent. Seventh Sir, one. I am also intelligent. Yes, yes, everyone is intelligent here. And Very cute good. also. Equally intelligent and equally cute. You all are. मैंने इतने इंटेलिजेंट और क्यूट बच्चे कभी नहीं देखे लाइफ में. Sir, if you were teaching us from NC, you will be knowing how cute we are. And how Yes. sweet. नहीं, Yes, you all are very sweet, very cute, outstanding, Sir, the second and one is intelligent, and incredible, and awesome, and marvelous, and So we bombastic. don't use Sir, don't tell us good quality. Can we focus on the next question? Okay, The ठीक है. camera. Camera is a good device. It lets us see from one place to another without any Sir, don't turn the point. change the topic. Camera, sir. Okay, बेटा, first part SKIS, first answer, second answer, first तो पहले से ही दिया था. Agree. eager. Eager. Eager, very nice. EAGER, eager. I am eager Third to. is achieve. I am eager to Third is see. ACSES. What is the meaning of eager? I am eager to see you on the screen. मतलब I am eager to see. What is the meaning of eager? बताएगा कोई? I am eager to see you on the screen. Sir, you please tell. Please tell. Eager का meaning पता है किसी को? Arhan? Sir. Waiting. Not waiting. Eager मतलब कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा जिस चीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर आप उसको चाहिए, आपको ईगर हैं मतलब. Okay, so that is eager. The third is Third word is achieve. Chase. One Chase you will का? tell, one I will. Chase answer is what is the answer of chase? Achieve. Achieve. So achieve. Sir, I am What? telling with full spelling. What is the answer of the third one? All of you. Achieve. ACSES. I'm not able to get it. What? Vamika, tell Vamika. Oh, very nice. इतने चालाक बच्चे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा. X. Thank you, sir. वाह, देखिए, super intelligent, super चालाक, super techno friendly. Fourth is short. Yes, sir. Fourth one. Okay, let me try the fourth one. Host का Vamika, होगा I will speak the fifth one. short. Is it short? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. the Yes, fifth is sir. ocean. 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 Cano. Ocean. Ma'am, ocean. Ma'am, ocean. Sir, Ocean. So the sixth Seasons. is night. sir, seasons. Sir, Sixth seasons. one. Night. 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 What? NIGHT. 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 Very good. Very good. NIGST. Sir, Night. sir, seasons. Sir, seasons.
Seventh is Votes. stone. Pathar. Sir, seasons is the answer. Sir, not tone. It is stone. Stone. Tones भी तो हो सकता है. Tones is also the right word. Stone भी बोल सकते हैं, tones भी बोल सकते हैं, tone भी तो हो सकता है. But we should write a word which suits the Sir, this stove. answer. Sir, we can write stove. Gas stove. Sir, seasons is the answer. SEASONS. Season. Rainy season. Winter Sir, season. in the seventh one, sir, No, it is not N. Sir, it is not letter N. Which one? But in the answers Sir, in it the is given. seventh. Which one? But in Sir, in the seventh, Seventh one? This one? sir, yes, the letter N is not given. In the so you answers? will write Oh, stove, let, sir. Sir, I am saying अच्छा that स्टोव मैंने स्टोन मैंने नोट्स पढ़ लिया था वर्ड वो वोट्स है बाय मिस्टेक आई रोट इट नोट्स इट इज वोट्स सो द वर्ड विल बी स्टोव STOVE am I right? sir, I Yes, was sir. telling gas stove, but you हाँ are नहीं sorry the voice was not It is coming the clear. season. Sir, it is the season. Seasons is the answer. Your voice was not coming, Vamika, to me. I don't know, there was some problem. The syllabus is completed. What about page number 46 and 47? They are Factopedia. Factopedia. कौन पढ़ेगा Sir, can I Factopedia? read Factopedia? Yes. चलो बेटा, Ashray read the first one. Ashray will read the first one. Diana, Princess of Wales. can I read the Helen Keller one? Okay, sir. हाँ. Second one will Vamika will read. Second one Mother Teresa. Alankrita will read Mother Teresa. I want to read Helen Keller. ठीक है, No, Helen sir, I Keller. will read Mother Teresa and Sir, I want to read the next one. Mother Teresa, chalo Alankrita, and then Bhavya will read Buddha, the Buddha or enlightened one. Diana, Princess of Wales, Second last one. 19,061 to 19,097, spent much of her life visiting the sick and homeless. She cared especially people with AIDS Especially and for sick children. She cared especially for sick children. यही पढ़ देना बेटा. Ashray, sir, what? read it again from the starting. Ashray, Diana, Princess. Diana, Princess of Wales, 19,061 to 19,097. Spent much of her life visiting the sick and homeless. She cared especially for sick children, people with AIDS, and the victims of landmine explosions. Very good. So Diana, Princess, she was a princess and she spent much of her life visiting sick and homeless. She was a very caring lady. So most of her life she kept on visiting the people who were sick and who were homeless. She cared about them a lot. So especially the children and the people who had AIDS. AIDS is a disease. Okay, this is a disease. AIDS and the victims of landmine explosions. A landmine explosion में जो लोग मतलब विक्टिम बने थे, मतलब जो लोगों को लॉस हुआ था, उन लोगों को विजिट करके उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करी. नाउ मदर टेरेसा. Yes, Many Alankrita. people called Mother Teresa in 19
2010 to 1997, a living saint. She was born in Macedonia, Macedonia. Albania, and became a nun. Albania. At the age of 12, she went to work in Kolkata and devoted her life for helping the poor, the sick, and the dying. Very nice. So Mother Teresa, she was born in 1910, in the year 1910, and she died in the year 1997. She was also called a living saint. So she was born in the city Macedonia, and it is a city of the country Albania. Albania एक country का नाम है. वहाँ पे एक city है Macedonia. Albania. अल्बानिया बोलते हैं उसको actually. We call it Albania. And became a nun at the age of 12. She became a nun at the age of 12. She went to work in Kolkata. Kolkata कहाँ पर है? Have you ever heard of the city Kolkata? Yes, sir. Obviously, yes. अपने इंडिया में ही है. Okay, it is the capital of West Bengal. West Bengal एक state है हमारे इंडिया में. वहाँ पर एक city है कोलकाता, very big city. Okay, so she started working in Kolkata as a nun, and she devoted her life for helping the poor people and the sick and the dying. जो लोग परेशान और मतलब बीमार थे और जो पुअर थे, उनकी सेवा में उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी मदर टेरेसा ने. शी ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज. डू यू ऑल नो? नोबेल प्राइज फॉर पीस. Yes, sir. वेरी गुड. चलिए, बुद्धा कौन पढ़ने वाले थे? भव्य रस्तोगी, पढ़ो बेटा. द बुद्धा The Buddha or एनलाइटेंड enlightened वन. was born in Nepal as an Indian princess called Siddhartha Gautam. 1563 to 568 563 to 483 BC. इस टाइम पीरियड में वो जिए थे. हाँ. He gave his wealth and family to search for truth. He thought that happiness might contain with what you have. He taught that happiness means being content with what you have. Very nice. So Sir, yes. मम्मा दादी का फोन आया था. अच्छा बेटा, फोन माइक आया ऑफ था कर लो. यार, बस दादी का मेरे से गलती से कर गया. माइक ऑफ कर लो बेटा. बाबू sir, नहीं तो बताना फोन कहाँ पर है. नहीं कर Prince देता. to Princess. Sorry Vamika, what were you saying? Sir, in the second line it is written prince, but Bhavya has written princess. Okay, by mistake he must have done that. No problem. The Buddha or enlightened one, बुद्धा को enlightened one भी बुलाते हैं, was born in Nepal as an Indian prince. तब नेपाल तो था नहीं इतने टाइम पहले. वो नेपाल was also a part of India only. नेपाल जो अब एक different country है, that was a part of India only. So it is a very मतलब long ago period. He was born in the year 563 BC and he died. he प्रिंस है वो, प्रिंसेस नहीं है. ही बॉय है. बुद्धा इज अ बॉय. बॉय नहीं मतलब मेल पर्सन. ठीक है, ही इज अ मेल. So he was born in the year 563 BC and he died in the year 483 BC. He gave up his wealth. वो प्रिंस एज अ प्रिंस पैदा हुए थे, मतलब बहुत बड़ी किसी
किंग के बेटे थे वो, he was the son of a king, and but he gave up his wealth, उन्होंने अपना जो भी किंगडम थी उसको छोड़ दिया, एंड फैमिली को भी छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच की तलाश में, ट्रुथ के पीछे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एंड ही टॉट दैट हैप्पीनेस मीन्स बीइंग कंटेंट विद व्हाट यू हैव। इनका कहना ये था कि हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। वेरी नाइस। हमें कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए दूसरों से, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसी में हमको खुश रहना चाहिए। वेरी गुड। Yes. Sir, यस। sir, tomorrow we have GK class. Tomorrow we have GK class. Tomorrow we don't have a GK class. Sir, but we have Excuse me, math. sir. Yes. Sir, can I read Maria Montessori? अरहान पढ़ेंगे, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, अरहान, read it. Okay, sir. Maria Montessori, 1870 to 1952, was the first Italian woman to qualify as a doctor. She became an expert at helping young children to learn more easily at school. Today, the Montessori method of learning is used all over the world. Very nice. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी और Ma'am, चैप्टर में this भी पढ़ा था हमने या नहीं? Sir, Maria can I ma'am. read Guru Nanak Dev? अभी पढ़ते हैं बेटा। मारिया मैम। मारिया मोंटेसरी, मारिया मैम, ओहो, मारिया मोंटेसरी से मारिया मैम याद आ गई। ओके, सो मारिया मोंटेसरी 1870 में बॉर्न हुई थी, 1952 में शी डाइड, एंड शी वाज द फर्स्ट इटालियन वुमन टू क्वालिफाई एज अ डॉक्टर। पहली इटालियन वुमन थी हु क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, डॉक्टर बन गई वो। देन शी बिकेम अ टीचर आल्सो, उन्होंने Sir, बच्चों को, हाँ जी, यस। sir, the Buddha one, sir, it is written, sir, ये तो कम होता जा रहा है, 563 से 483 हो गया ये तो। यस, इट इज आ करेक्ट, गई है। वो सही लिखा है। Because before Christ, we used to count the time backwards. यस, Yes, वेरी BC. नाइस। देखो ये बीसी आया। अभी हम लोग कौन से ईयर में चल रहे हैं? एडी में चल रहे हैं हम लोग, एडी में। तो एक ईयर होता है जीरो ईयर, जीरो के बाद 1, 0 ईयर है मान लीजिए बीच में, 0 के बाद जो ईयर आया दैट इज 1 एडी। यहाँ पर एडी है, एडी इस साइड में बढ़ रहे हैं ऐसे करके, ईडी, फिर 2। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी हम लोग चल रहे हैं 2021 ईयर, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जब हम बीसी में जाते हैं तो बीसी ऐसे बढ़ता है उल्टा, 1 बीसी, यहाँ पे बीसी आ जाएगा, 1 बीसी, फिर उल्टा 2 बीसी, 3 बीसी, ऐसे उल्टा चलता है। तो 483 बीसी बाद में आया, पहले क्या आया था? 563 बीसी आया था कहीं पर, 483 बीसी बाद में आया था। ओके, गॉट इट? ऐसा होता है बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जिस ईयर में पैदा हुए थे वो ईयर 0 ईयर माना जाता है, 0। ओके, ओके, सो हु वाज रेडी? मारिया मोंटेसरी कौन पढ़ा था? अच्छा, पढ़ लिया था। किसने पढ़ा था? रान ने पढ़ा था। वेरी गुड, ठीक है। सो शी बिकेम एन एक्सपर्ट एट हेल्पिंग यंग चिल्ड्रन, उन्होंने टू लर्न मोर इजीली एट स्कूल, उनका मेथड जो है पढ़ाने का जो तरीका है वो सब जगह फॉलो किया जाता है। मोंटेसरी मेथड जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन करके, एक्टिविटी से करके, तो मैं भी, नॉट ओनली मी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स नाउअडेज यूज दिस मेथड टू टीच स्टूडेंट्स बाय इंटरेक्टिंग द स्टूडेंट्स। मैंने आपसे बातचीत करता हूँ, every teacher talks with you and then they teach. Am I right or not? Yes, sir. It is always the two-way communication. So Sir, this we method, sir, we can't explain anything if we will not open our mouth. yeah, नहीं तो माउथ तो नहीं, इट इज अ टू वे, मतलब एक तरीका होता है कि ओनली टीचर इज स्पीकिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल, तो वो ओल्ड मेथड है,
वो आजकल यूज नहीं होता है। न्यू मेथड क्या है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ टॉक। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? Yes, sir. Like sometimes you ask some question and everyone Answers. shout, "Ma'am, sir." Everyone answers and everyone, yeah, you are right. And everyone asks the questions also. So that is something related to this method only. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं गुरु नानक देव, अपने इंडिया के ही हैं। Sir, Yes, Sir, Ashik. he is of Pakistan. गुरु नानक देव इज ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान जब ये पैदा हुए थे गुरु नानक देव, पाकिस्तान वाज इन इंडिया ओनली। Okay, sir. ओके, पाकिस्तान अब अलग हुआ है। excuse me, sir. यस बेटा। After Guru Nanak Dev, can I? Yes, beta, you can read after Guru Nanak Dev, but who is going to read Guru Nanak Dev? Alankrita was asking to read. बेटा पढ़ो। नहीं पढ़ना है? पढ़ दो बेटा। What happened? Sir, you will read. क्या हो गया अलंकृता? नहीं पढ़ोगी? नाराज Sir, हो गई? Bhavya can read. Sir, you What can happened? read. I'm not able to see anything. Alankrita, what is this? ये क्या है? थोड़ा दूर करो। Sir, cake. हाँ तो What happened? आज आपका बर्थडे है इसलिए नहीं पढ़ोगे? तो Sir, you read. I read. मेरे पास जो पिक्चर है एक्चुअली वो थोड़ी सी ब्लर है। वामिका, can you Sir, read? okay, I'll resend it. I think we should read it tomorrow whenever we have the next class. Or you all please prepare it, read it. Okay, prepare करिए इसको. I Sir, will I be. have sent. चलो मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से. मैं ही पढ़ देता हूँ. Sir, you cannot read now. Sir, whenever we will have our GK class, I will read Helen Keller. Okay. Guru Nanak Dev was born in the year 1469 and died in the year 1539. Was born in Talwandi, Pakistan. Now it is in Pakistan, but when he was born, Pakistan was a part of India only. Okay. He founded Sikhism. He is the founder of Sikhism. Okay. Do you all know Sikhism is a religion like Hindu, Muslim? Sikhs are also it is another religion, Sikhism. So combining ideas of Hinduism and Islam, Hinduism और Islam के ideas को combine करके एक religion बना था Sikhism. Okay, so he was the founder of that religion, Guru Nanak Dev. ठीक है? Kongzi, Kongzi कौन पढ़ेगा? Kongzi कोई नहीं पढ़ेगा. Sir, time is over. Time is over. We will do tomorrow. Yes. Yes, Tomorrow, sir. no, next. Whenever we have the next class. Bye.